मूविंग फॉरवर्ड सर, आज क्या करने वाले हैं? सर आज क्या करेंगे बेटा? आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लाइट्स अरेंज कर लेते, लाइट सही नहीं आ रही क्या? यस, लाइट खराब है। आई गेस सही है लाइट, है ना? ग्रेट। तो गाइस आज क्या करने वाले हैं? वी आर गोना स्टडी, यस बेटा यश, यस फॉर मेकिंग नोट्स आई हैव मेड अ वीडियो यस्टरडे। ओके, कल एक वीडियो आई है मेरी, हाउ टू मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी। गाइस यू कैन गो एंड वॉच इट, यू कैन अप्लाई इट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा, सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, आज क्या करने वाला है गाइस? आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड, वी विल स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, वी विल स्टडी अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम ये करने वाले हैं गाइस, अराउंड 20 मिनट्स में ये कर लेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल आल्सो हैव मेंटी। टुवर्ड्स द एंड क्या करेंगे? हम मेंटी भी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? हु विल टेल मी? यस, यस गाइस मैं बताता हूँ। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा बेसिकली तीन तरह की होती है, तीन चीजें होती हैं। दैट इज हार्ट, अब फेवरेट हार्ट होता है उसमें, जो हमारा फेवरेट हार्ट होता है उसमें। ठीक है, देन उसमें होता है ब्लड, एंड देयर इज ब्लड वेसल्स। Guys, there are three things present in the circulatory system. Yes, these are the three things that are present in our circulatory system: heart, blood, and blood vessels. And guys, these are the three things which are present in, yes guys, which are present in, yes exactly guys, in the circulatory system. ठीक है, हार्ट जो कि पंप की तरह एक्ट करता है, ब्लड विच इज द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पंप, or blood vessels, these are the pipes guys. Blood vessel is, you can imagine there is system of pipes in my body, there is a system of pipe in my body, मतलब जैसे कि आपकी बिल्डिंग में पाइप का सिस्टम होता है ना, likewise there is a system of pipe in my body जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वेरी गुड सर, समझ आ गया बेटा। अपार्ट फ्रॉम ब्लड एक और फ्लूइड होता है लिम्फ करके, वो भी हमारे बीच में फ्लो करता है। देन उसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो भी होता है। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होता है? वो वाला फ्लूइड जो कि टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, लिम्फ क्या होता है बेटा? लिम्फ एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होता है। वेरी गुड, सबके बारे में 1, 2, breathe, 3. सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ यार, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना? कनेक्टिव टिश्यू क्यों? ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है ना, और ये फ्लूइड होता है। ओके सर, तो इसका फंक्शन क्या है? एग्जैक्टली गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड गाइस, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? ये सबसे पहले तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जैसे कि देखो, मैंने ऑक्सीजन ब्रीथ करी है, मेरे लंग्स में आई है, this oxygen has to reach all parts of my body, it has to reach my brain, it has to reach my muscles, and it has to reach my legs, है ना? तो how does this go beta? The air which I have breathed in lungs से it goes into the blood, and from the blood this blood takes it to all parts of my body. I breathe in oxygen, this oxygen goes into the blood, and this blood takes it to all parts of the body. Okay, so it helps in transportation of respiratory gas, it helps in transportation of nutrients guys. Like for example, I just had lunch, ठीक है, मैंने खाना खाया। what is the purpose of eating the lunch guys? This lunch which I have had, it is converted into simple form। मैंने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, ठीक है, रोटी वोटी खाई है तो इट्स कॉम्प्लेक्स, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। then this food has to reach again all parts of my body, my muscles, my brain, my legs, and everywhere. Who takes it from my intestine? मैंने खाना खाया, it goes into intestine, from intestine how does it reach my brain? With the help of blood. Blood helps in transportation of all these things, right? Blood helps in transportation of all the nutrients. Next thing guys, lot of waste is produced in my body. For example, your home, lot of waste is produced, like every day, you know, your mom or your maid will be, you know, mopping it, or you know, झाड़ू मारते हैं, brooming it, broom करते हैं। So what happens guys, likewise there is daily many activities happening in my body, so lot of waste is produced as a result, lot of waste is produced as a result of this. So this waste has to be removed. For example, it is like the kachra wala, like blood is like the
you know, who comes to pick up your, you know, kachra from your home, right? So exactly, like it takes kachra from my muscles, it takes kachra from my brain, it takes kachra from my other muscles, it takes kachra from my, you know, legs. Guys, I'm not talking about shitting over here. I'm talking about other metabolic waste like urea or other waste produced in the body. Okay, very good, sir. It also helps in transportation of hormones. Means what are hormones, guys? These are chemical messengers. These are chemical messengers produced in the body which helps in control and coordination. For example, beta, insulin, you would have heard of insulin. It's a very common hormone which helps to control, you know, blood sugar. तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? That is produced by, guys, exactly, that is produced by the, that is transported by the blood only in my body. Very good. Moving forward, as apart from that, guys, my body का temperature is 37.5 degrees centigrade. That is because of the blood. It helps in maintaining water and iron balance, guys, है ना? It provides immunity. The blood helps in providing immunity, right? Very good. That's why it is very important. Then I'm moving forward, guys. Now what are we going to study in circulatory system is we study about blood first, है ना? है ना? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, देन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स आल्सो. ओके सर. व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड, गाइस, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. हु विल टेल मी कि ब्लड किस चीज से बना होता है? व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द ब्लड इज मेड अप ऑफ? यस गाइस, एग्जैक्टली. Blood is made up of plasma and blood is made up of blood cells. You like, so what is plasma? What is plasma? But a plasma makes up 55% of the blood. Blood cell makes 45% of the blood. है ना? I'll be like, so what is plasma? Okay, but I'll tell you. I generally have my bottle. Bottle मेरी वहाँ पे चली गई है. Bottle देखो. Bottle में तो क्या कहते हैं ना? देखो. Imagine there's a water bottle. है ना? Imagine there's a water bottle. There is water in it. है ना? That is plasma. Then I took a handful of red color sand and put it inside the water. Then I took a white color sand and put it into the bottle. Then I took a pinch of yellow color sand and put it into the water. Then I mixed them. Are you getting my point? What did I do? I have taken a water bottle. This my water is there. Then I have taken red sand, yellow sand, and white sand, and I have mixed it. Will the sand get dissolved in the water? No. So guys, if you can see in the bottle, the water is plasma, and the red sand, white sand, and yellow sand, what are they? They are the blood cells. I hope you are understanding. Yes, guys, I hope you are understanding. Yes, amazing. है ना? Very good. Now, guys, plasma में क्या क्या होता है बेटा? Plasma में generally there is, you know, water present, there is glucose present, है ना? There is amino acid present, there are proteins present in the plasma, right? Very good. Very good. So blood cells, what are the blood cells? Well, blood cells are of three types. RBC, you would have heard of them, red blood cells, which helps in transport of gases. Mainly, they are helpful in transport of gases. Then there is WBC. So what do they do? But they are helpful for immunity. What are they doing? They are responsible for helping us in providing immunity. मतलब they help us to fight against the disease like corona. Corona में, you know, they are saying कि many people are immune to corona. Why? Because of their guys WBCs. Okay, now you'll be like, sir, किसमें? So बाकी लोगों में है WBC, कुछ लोगों में WBC क्यों नहीं है? कोरोना से बचते क्यों नहीं? Why are not safe from corona? Beta, why is because see, some people have strong soldiers. Like for example, it's like an army. Say I am India, है ना? So there might be some Zimbabwe also. There might be some Afghanistan also, है ना? So as it depends on the army of each country. I am a country, so my army might be stronger. There's another person whose army might be weaker. For example, old people, their army of WBC is weaker as compared to young people whose army of WBC is stronger. That is why young people have more immunity against the corona as compared to the old people. Are you getting my point? समझ आ रही है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर वॉर होती है कोरोना की फोर्स और मेरी फोर्स में, तो इट डिपेंड्स वेदर माय आर्मी इज वीक और स्ट्रांग, वीक और यू नो. या आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Moving forward, guys, platelets. What's the function of platelets? It helps in clotting of the blood. Platelets, what does it help in? It helps in clotting of the blood.
Yes, blood helps in clotting of the blood. Platelets helps in clotting of the blood. ठीक है? So three things we have understood. So RBC helps in transportation of gases. WBC sir helps in immunity. Platelets helps in clotting of the blood. Very good, yaar. Amazing. Prem Lata, thank you. Okay, I Chahat Thakur. Difference between WBC and RBC. But WBC is called as white blood cells. RBC is called as red blood cells. पहली बात तो RBC consists of red cells, मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन होता है. WBC is helps in immunity. WBC has nucleus. RBC do not have nucleus. ठीक है, WBCs do not have hemoglobin. RBCs have hemoglobin, है ना. तो these are the three factors you can write. Moving forward, as I told you guys, 55% plasma होता है, 45% are cell. Blood plasma is the fluid part of the blood, right? Then contains water, inorganic ions, proteins. मैंने बताया जो प्लाज्मा में होता है ना. It helps in transport of gases, nutrients. It regulates body heat and maintains body pH. It helps in maintaining the body का pH. ठीक है, तो just understand that it's a liquid part of the blood. Moving forward, let's see. As I told you, RBCs are also called as erythrocytes, guys. ये याद रख लेना. What are erythrocytes? Erythrocytes मतलब, yes guys, RBC. Eri for RBC. Erythrocyte is equal to RBC. Very good, sir. है ना? Thank you, Arshad. Then WBC is, guys, leukocyte. WBC is leukocyte. Platelet is equal as thrombocyte. Guys, इसका नाम लिख लो because they will ask which of the following helps in clotting of the blood. Erythrocyte, leukocyte or thrombocyte. You should write thrombocyte. Platelets is thrombocyte. ठीक है, which of them helps in providing immunity? Leukocytes, platelets or leukocytes. Which of the help in transportation of gases? Yes, guys. The RBC helps in transportation of gases. Yes. Yes, guys. Did you understand till here? Very good. Very good. है ना. Then guys, there are different types of WBC. ठीक है, WBCs are of two types, called as granulocytes and also called as agranulocytes. Right, guys? Granulocytes and agranulocytes. What do you mean by granulocytes? But a granulocyte means they have grain-like structures in their cytoplasm. When we get the grain-like structures are present in the cytoplasm, agranulocytes, they do not have that grain-like structures in their cytoplasm. Okay, very good, sir. But a basophil, eosinophil, and neutrophil. Neutrophil are, guys, what? Granulocytes. Then here, lymphocyte and monocyte, these are agranulocytes. मतलब इनके cytoplasm में there is no grains. Okay, बेटा इनमें सबसे important चीज is you need to understand is what will come in the exam is identify. ठीक है, how do you identify various types of WBC? बेटा you will identify based on the nucleus. If you can see basophil में if you can see it has bilobed nucleus, है ना. Then if you see neutrophils, it has multi-lobe, 3 lobes of nucleus. If you can see यहाँ पे, ठीक है. If you see eosinophil, यहाँ पे देखो, it consists of again bilobe nucleus. Guys, lymphocyte, big large nucleus. Monocyte again big large nucleus. So guys, how will you identify different types of WBC based on the nucleus present? ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो देख लेना. व्हाट इज लाइक यू हैव टू मेक नोट्स एंड अंडरस्टैंड, लर्न इट. ओके, तो obviously you can see neutrophils have multi-lobe nucleus, है ना. basophil and eosinophil bilobe nucleus, है ना. monocyte kidney shaped nucleus, lymphocyte a large nucleus. So you should understand these nucleus types. Okay, very good. Now guys, platelets जो मैं बताया था, thrombocyte. Yes beta Rohini, they help in blood clotting. Yes Rohini, very good. Let us understand blood clotting, guys. बहुत ही important है. ठीक है, blood clotting मतलब बेटा see, I get hit, I get injured, the blood starts coming out. After a point, the blood stops going in, है ना. Yes बेटा Arshad, I teach ICSE in Vedantu का subscription. Yes. Now guys, what happens is I get cut, blood starts coming out. Then what happens, guys? After a point, the blood stops. Yes or no? Does this happen with you guys? Yes, sir. So why does this happen, beta? This happens because of platelets. Sir, how? I'll just explain, beta.
है ना? I'll just explain. See, what happens is now, as soon as there is an injury, what do platelets do is they release an enzyme called as thrombokinase. As soon as I fell down, an enzyme is released by platelets called as thrombokinase. This thrombokinase converts prothrombin. There's a protein called as, guys, prothrombin in the blood. This is converted into thrombin. Prothrombin is present in, guys, plasma. It is converted by the thrombokinase and calcium ion, independence of calcium ion to thrombin. This thrombin, guys, again converts another protein, fibrinogen, into active fibrin. This thrombin converts fibrinogen, which is present in the plasma, into fibrin. Okay, sir. Then प्लाज्मा पता है ना बेटा, जिसमें ब्लड है, ब्लड किसके बना है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. नाउ गाइस, व्हाट हैपेंस टू दिस फाइब्रिन? दिस फाइब्रिन, or also called as thrombus. कैसे समझ आया? Are you able to understand? Yes. Yes, बेटा चाहत. Did you understand? Yes, तान्या गुप्ता. Focus. इंजरी हुई, the platelet start releasing thrombokinase. है नहीं? थ्रोम्बोकाइनेस क्या करते हैं? जो प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी मेरे प्लाज्मा में होता है, दे कन्वर्ट इट इनटू थ्रोम्बिन. व्हाट इज थ्रोम्बिन? टू थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन, व्हिच इज द सॉल्युबल फॉर्म, इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन. सो ये सॉल्युबल होता है, इसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है. दिस इनसॉल्युबल फाइब्रिन, व्हाट डज इट डू गाइस? इट फॉर्म्स अ नेटवर्क जिसमें आरबीसीज गेट एंटेंगल्ड एंड इट फॉर्म्स अ क्लॉट. मतलब देखा है, जो क्लॉट होता है इट इज ऑलवेज रेड, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके पील कर देते हैं, राइट? व्हाट डू वी डू विद द क्लॉट? उसको ऐसे ऐसे करके स्क्रैच करके निकाल देते हैं. दैट इज ब्लड क्लॉट. That is a collection of fibrin and thrombus, guys, right? I hope you understood. I'm moving forward, guys. You can watch it again. ठीक है? Okay, any doubts? I'll take 2 doubts पूछो जल्दी से. और मेंटी भी ज्वाइन कर लो, guys. You can join the Menti 862393. Yes, come on. मेंटी वाला जल्दी से सारे बच्चे. Yes, guys, join the Menti. Yes, guys. Blood transfusion. Guys, होता क्या है? You would have seen people met with accident, है ना, or undergoing some surgery. They sometimes need blood. Okay, they sometimes need blood, right? तो guys, in that case you would have read ना, they match the blood, है ना, blood को match करते हैं, है ना बेटा? ब्लड को मैच करके देन ओनली दे गिव इट. तो वो मैच कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, विल टॉक अबाउट इट. जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो क्यों होते हैं? सर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ओ है, तो ये क्यों होता है? लेट अस टॉक अबाउट इट, है ना बेटा? वेरी गुड. नाउ गाइस, देयर आर 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम. जब हमने देखा है ह्यूमन में ना, देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स वी टॉक अबाउट. वन इज ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ, राइट? लेट्स टॉक अबाउट इट. बेटा now how do we tell कि blood group क्या है? बेटा blood groups are decided on the basis of a protein present on the RBC. मेरे आरबीसी के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं. बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ दैट प्रोटीन आई विल से कि ये कौन सा है. यस गाइस, यस, आर यू टू अंडरस्टैंड? मेरे आरबीसी के ऊपर देयर आर प्रोटीन्स प्रेजेंट, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोटीन इज प्रेजेंट आई विल से कि ब्लड ग्रुप क्या है. फॉर एग्जांपल से माय ब्लड ग्रुप इज ए, तो all my RPCs have a protein A on them. For example, my blood group is B. All the RBCs on my body will have protein B. Are you getting my point, guys? Say there for example, my blood group is AB. So all the RBCs have A as well as B protein on them. समझ आया? If O blood group, मतलब there is no protein, neither A nor B on my body. Yes, did you understand, guys? Happy birthday, Alia. May God bless you, beta. So did you understand, guys? Yes or no? Yes, tell me. है ना बेटा?
तो बेटा ए जो प्रोटीन है वी कॉल इट एज एंटीजन। एंटीजन को एक और चीज भी कहते हैं, एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीज कॉजिंग एजेंट। बेटा जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, एंटीजन इज आल्सो व्हाट, एंटीजन इज प्रोटीन जो कि ब्लड सॉल्युबल है। एंटीजन और चीज को किस कहते हैं गाइस, एंटीजन कहते हैं जो कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी में आता है ना, उसको कहते हैं हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो गाइस देयर इज अ थिंग कि माय बॉडी ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट एन एंटीजन। माय बॉडी ऑलवेज प्रोड्यूसेस एक एंटीबॉडी बनाती है जो कि डिसीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करने में हेल्प करती है। ओके सर, नाउ गाइस ब्लड ग्रुप ए, it has an antibody B in it. It has an antibody B in it. Blood group B, it has an antibody A in it. Blood group AB, it does not have an antibody. Blood group O, it has anti A and B as well. Are you getting my point? कहीं समझ आ रही है? That is why C, it produces an antibody against this protein B. मतलब blood group in A, blood in A produces an antibody against this one. Similarly, B has produced antibody against this one. As here both the antigen are there, there is no antibody produced. Here, as there are no antigen present, both the antibodies are produced. Yes guys, तभी समझ आ रहा है, अगर A antigen आ गया तो this antibody A will kill it. If B antigen has come, this antibody B will kill it. Are you getting my point guys? Yes or no? Yes guys, are you able to understand everyone? Give me a high five. Yes, give me a high five guys if you are able to understand this. Very good. So what does the blood group A has guys? Blood group A has an antigen A on the RBC. Blood group B has antigen B on the RBC. Blood group AB has antigen A and B on the RBC, and O has no antigen. Whereas blood group A has antibody B against B, है ना? And blood group B has anti A. That is why guys you cannot give up A blood group to B और B A को नहीं दे सकते. You cannot give A blood group to B or blood B to A. क्यों? इससे क्या होगा guys? Because if you do that, then this antibody A, if you give this blood to this guy B, the antibody A will react with this thing and it will cause agglutination of blood. Agglutination मतलब chunks of blood will be produced, है ना? Which is not good for the body and person will die. Are you getting my point? When you give A blood group to B blood group, what will happen? The antibody in the B blood group will act with the antigen on the A and kill all the RBCs here. Hence, the person won't be able to survive. Yes? Did you understand, guys? Very good. Moving forward. So as I told you guys, what is antibody? It's a protein, protective protein of the immune system which is produced against antigen. It is found in the plasma. It recognizes and binds to the antigen and kills it. It recognizes and finds the antigen and kills it. That is why if you introduce the A blood group into B, this antibody A will recognize the antigen and it will kill it, right? Which we don't want. As I told you guys, see, देखो, group A, it has antibody B. Group B, it has an antibody A and antigen B, antigen A here. Group AB does not have this thing. That is why guys, if you see, O is called as universal donor. O is a universal donor. Can you see? It is a universal donor, whereas B is universal recipient. That is why guys, can you see? O is a universal donor, AB is a universal recipient, because see, it does not have any antibody. It does not have any antibody. That is why it can receive from everyone. Whereas this thing, if you can see, it has both the antibody A and B. So ये बेचारा can receive only from O. Yes, very good. Now guys, आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, व्हाट इज दिस? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, व्हाट इज दिस? बेटा पॉजिटिव नेगेटिव इज डिटरमिन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर प्रोटीन. मतलब देखो आरबीसी पे ए होता है या फिर बी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, इसका इज RH प्रोटीन. इसको दूसरे कलर में लिखते हैं. जैसे प्रोटीन कॉल्ड इज RH प्रोटीन. If there is RH protein also present in the RBC, I will say positive है, A positive. अगर RH protein नहीं है, there is no RH protein, what will I say? I will say A negative है. In the RBC, if A वाला antigen भी है और RH वाला antigen भी है, I will say it is RH positive. If RH antigen is not there, it will say RH negative.
जनरली ह्यूमंस में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, मतलब हर किसी के में आरएच होता ही है, कहीं बहुत कम लोग होते हैं जिनमें आरएच नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। वाई आरएच? बेटा आरएच मींस रीसस। ये वाला जो प्रोटीन है इट इज फाउंड इन द आरबीसी ऑफ द मंकी रीसस, तभी वी कॉल इट एज दिस गाइस रीसस फैक्टर। इसको कहते हैं रीसस फैक्टर और आरएच फैक्टर, राइट? वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, यू वुड हैव रेड अबाउट दिस थिंग, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। सर कीप दीज ब्लड ग्रुप्स रिसीव, देखो ओ नेगेटिव कैन रिलीज रिसीव, इतना डिटेल में जाओ, यू जस्ट अंडरस्टैंड। सी ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है, बी बी से ले सकता है या ओ ग्रुप से ले सकता है, ए बी कैन रिसीव फ्रॉम ए बी और ओ ब्लड ग्रुप से, ओ कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ। ये चार याद रखना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right, moving forward, any doubts guys? Any doubts till here? Come on.